हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 रैशनलाइज जो किताब है उसमें सोशल साइंस की जो टेक्स्ट बुक है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 3 उस किताब की जो सेकंड चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म उस पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे थ्रू हॉट्स एमसीक्यूज़। और आज हम लोग पूरे चैप्टर से 30 एमसीक्यूज़ ले करके पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सेक्युलरिज्म प्राइमरीली मीन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट? बेसिकली सेक्युलरिज्म का मतलब होता है द स्टेट रिमेन्स न्यूट्रलिटी, मेंटेन्स इट्स न्यूट्रलिटी एंड रेस्पेक्ट्स ऑल रिलीजियंस इक्वली। ओके, देखिए, द इंडियन सेक्युलरिज्म मीन्स द स्टेट डज नॉट फेवर और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी रिलीजियन। किसी को फेवर भी नहीं करता है, किसी के साथ में कोई मतलब अगेंस्ट में भी नहीं जाता है। एंड रेस्पेक्ट्स ऑल द रिलीजियंस इक्वली वाइल अलाउइंग फ्रीडम टू प्रैक्टिस religion. Why is it important to separate religion from the state? Because this will prevent discrimination and maintain equality. याद रखिए, separation prevents dominance of any one religion and ensures the peaceful coexistence. Next, how does Indian secularism differ from secularism in some other countries? तो भाई उत्तर है इंडियन सेकुलरिज्म अलाउ स्टेट इंटरवेंशन। यहाँ पे स्टेट इंटरवीन कर सकते हैं। आप मेरा सेकुलरिज्म के ऊपर हमने 2 वीडियोस बनाए, आप ज़रूर उनको देखिएगा, वहाँ भी हमने बहुत सारी बातें कही थी। सो इंडियन सेकुलरिज्म अलाउ स्टेट इंटरवेंशन टू रिफॉर्म रिलीजियस प्रैक्टिसेस। याद रखिए, इंडियन स्टेट इंटरवीन्स टू एबॉलिश प्रैक्टिसेस। कैसे प्रैक्टिसेस? जैसे कि अनटचेबिलिटी, balancing non-interference as well as reform. Next, what might happen if government enforces one religion? तब तो सत्यानाश हो जाएगा, because there will be discrimination and social disharmony. So favoring one religion can cause inequality and conflicts. Now, what role does secularism play in protecting minorities? Basically, secularism, it ensures minorities have freedom and equal respect. Remember that, dear students, कि secularism protects religious minorities against discrimination or domination, उनके ऊपर कोई आधिपत्य ना कर पाए. Now, what does principal distance mean in Indian secularism? Basically, इसका मतलब है the state maintains separation but intervenes when needed based on constitutional practices. So it balances non-interference and necessary intervention to uphold rights and equality. जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में आपको यही वाला बात बताया था। देखिए यहाँ पे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखिए यहाँ पे टू परफॉर्म इट कैन अलाउ बेसिकली state intervention to reform religious practices, है ना? So the state has intervened to abolish practices like untouchability. So इस तरीके से नॉन इंटरफेरेंस के साथ में चेंज रिफॉर्म का एक बैलेंस है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज रिटेलिएशन नॉट ए प्रॉपर रिस्पॉन्स टू रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन? बदला, ओके, गुस्सा रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं है, बिकॉज उसकी वजह से कन्फ्लिक्ट और डिवीज़न और ज़्यादा बढ़ेगा। इट एस्केलेट्स कन्फ्लिक्ट एंड डिवीज़न। रिमेंबर, रिटेलिएशन लीड्स टू मोर डिस्क्रिमिनेशन एंड जस्टिस एंड इक्वलिटी आर आवर गोल्स। यू हैव टू रिमेंबर दिस, बट दिस इज़ वेरी हार्ड। ओके, पर ये बात याद रखना होगा। एक्शन रिएक्शन करते करते पूरा बर्बाद हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रा रिलीजियस डोमिनेंस? कौन सा है इतने सारे में से? आंसर है बी। देखिए, डिस्क्रिमिनेशन विद इन द सेम रिलीजन। यहाँ का क्या कहा गया? इंट्रा रिलीजियस, मतलब विद इन द सेम रिलीजन, लाइक कास्ट बेस्ड अनटचेबिलिटी. Okay, so discrimination can happen within the same religion like caste based untouchability, and secularism opposes domination
इवन विद इन द सेम रिलीजन, मतलब डिफरेंट रिलीजन्स के बीच में तो मना करता ही है, सेम रिलीजन के बीच में भी अगर होता है झमेला, सेक्युलरिज्म opposes this, okay, the discrimination within the same religion. Now, how does secularism help maintain peace in a diverse society? Basically, by respecting all religions equally and preventing domination. कोई किसी के ऊपर आधिपत्य ना कर सके. Next, what does it mean for a state to be neutral towards religion? Basically, इसका मतलब है state neither favors nor opposes any religion, and neutrality basically ensure करती है equal treatment of all faiths. मतलब जो लोग जो भी चाहे रिलीजन फॉलो करें, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा. ओके, नेक्स्ट, how does secularism protect individual freedom? Basically, by allowing individuals to freely practice their religion without fear. Okay, why can state intervention in religion be necessary? Basically, to reform harmful religious practices that violate rights. So, you see, Indian secularism allows intervention to uphold constitutional values and rights. Now, which is an example of religious diversity within the same religion? Basically, ये देखिए, सुन्नी and Shia branches in Islam in examples में से. Different groups within a religion show intra-religious diversity. Okay. Now, what is the risk if a government enforces religious laws that favor the majority religion? क्या होगा? Then of course there will be domination and alienation of minorities. वो बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएंगे, dominated होंगे, and this will violate the secular principles and harms the social cohesion. Okay. Next question, how does secularism align with democracy? दोनों के बीच में कैसा alignment है? Basically देखिए, by secularism aligns with democracy by ensuring equal rights and freedom regardless of religion, and democracy and secularism uphold freedom and equality for all the citizens. Now, how do schools reflect secularism? Basically, by including holidays of various religions. बहुत इम्पोर्टेंट है, आप किसी भी धर्म के हो, उस धर्म के जो इम्पोर्टेंट दिवस होते हैं उसको एज ए हॉलीडे ट्रीट किया जाता है स्कूल में. सो बाय दिस वे schools include holidays of various religions, and by this way the schools are reflecting secularism. समझ में आया? So celebrating multiple festivals shows respect for all religions. Now, next, what ensures that one religion does not dominate others in India? Basically, secularism and constitutional safeguards. याद रखिए, India's constitution aim to prevent religious domination. Now, which is not true about Indian secularism? कौन सा true नहीं है? Basically, it bans all religion from public life. बिल्कुल गलत है ना. So, Indian secularism neither bans religion nor promotes it, but maintains a balance. जहाँ ज़रूरत पड़ता है वहीं पे intervene करता है. Now, what is the importance of recognizing different views within a religion? क्या होगा? This will help. देखिए, this will help to understand diversity and prevent domination within the communities. याद रखिए, recognizing diversity helps protect rights of minorities within the same religion. Now, how does religious freedom contribute to social harmony? Basically, by allowing people to freely follow their beliefs. So, freedom to practice religion reduces conflict and also builds harmony. Now, what kind of discrimination does secularism oppose? Basically, it opposes discrimination both between different religions and within the same religion. Okay, so all types of religious domination को oppose किया जाता है secularism में. Now, which of the following best describes the Indian state's approach to religion? बताइए.
बेसिकली आंसर है सेपरेशन विद प्रिंसिपल्ड इंटरवेंशन टू प्रोटेक्ट राइट्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया। सो इंडियन सेक्युलरिज्म balances separation and reform intervention. Now, how does secularism help in maintaining democracy in India? कैसे? Basically by ensuring equality and freedom that supports democratic values. So, secularism strengthens democratic principles by protecting the rights of the citizens. What is the role of the constitution in secularism? Basically, to mandate state neutrality and protect religious freedom. याद रखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट enables secularism at the core of governance. Now, what should the state not interfere? Why should not interfere in religion? To maintain freedom of conscience and practice for citizens. याद रखिए unnecessary interference limits religious freedom and rights. What is one example of state intervention in Indian secularism? वो है legal ban on untouchability. So state reforms harmful practices violating constitutional rights. Now, next question. How do religious festivals celebrated by different communities reflect secularism? ये हमने बताया है. They reflect equal respect and coexistence, एक साथ रहना, है ना. सो सेलिब्रेटिंग डाइवर्स फेस्टिवल्स, हम लोग जो है चाहे किसी भी धर्म के हो, हम लोग सब मनाते हैं. होली, ईद, दिवाली, क्रिसमस, है ना, सब कुछ मनाते हैं. नाउ what would be a consequence of ignoring secularism in India? Basically increased communal violence and discrimination, जिसकी वजह से खतरे में पड़ जाएगा पीस एंड यूनिटी. नाउ what is an important lesson students learn from understanding secularism? क्या है भाई? आंसर है to respect diversity and uphold equality among religions. याद रखिए सेक्युलरिज्म हम लोगों को टॉलरेंस एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल सिखाता है. ओके, नाउ हाउ डज सेक्युलरिज्म बैलेंस फ्रीडम एंड इक्वालिटी? बेसिकली बाय अलाउइंग रिलीजियस फ्रीडम while protecting all from discrimination. And secularism जो है it ensures the freedom of belief with equal right for all the citizens.